अस्सलाम वालेकुम। आज कम्युनिकेशन स्किल्स का जो हमारा दूसरा लेक्चर है, उसमें हमने हाउ टू मेक अ सीवी, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सीवी, व्हाट आर इट्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या उसके जो अज्जा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। इट वुड बी अ शॉर्ट लेक्चर, नॉट अ बिग वन। और इसमें हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ सीवी का भी पता होना चाहिए कि सीवी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है, और फॉर व्हाट पर्पस वी यूज़ सीवी, और इट्स सेकंड नेम ऑफ सीवी इज़ रिज्यूमे। इसे हम रिज्यूमे भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो सीवी के कौन से पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम में से हर शख्स ये बात जानता है कि whenever we try to apply somewhere for a job, we need a CV और resume। हमें CV की ज़रूरत होती है और या resume की ज़रूरत होती है। तो why a person or your employer should see your CV? आपकी CV को या करिकुलम विटाए जिसे आप बोलते हैं, वो उसे क्यों देखे? वो आपकी सीवी की तरफ वो क्यों आए? What should be the reason? Does your CV have all those potentials and qualities कि वो उसकी attention को अपनी तरफ attract करे? Is this possible? क्या ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं कि वो आपकी सीवी की तरफ एक नज़र देखे, फिर वो उसको पढ़े? देन देखिए ना, सबसे पहली बात ये है कि जब तक वो आपकी सीवी को उठाकर पढ़ेगा नहीं कि उसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, रेफरेंसेस कौन से हैं, कौन सी कम्युनिटी में आप रहते हैं, तो सीवी का एक अट्रैक्टिव होना, दैट इट मस्ट बी अट्रैक्टिंग द आई ऑफ योर एम्प्लॉयर और द पर्सन वेयर यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। तो जब तक ये चीज़ उसमें मौजूद नहीं होगी, then it's impossible for you, आपके लिए impossible है to attain and achieve a job at any workplace। तो ये बात तो एक तय है कि हमें अप्लाई करने के लिए सीवी की ज़रूरत है, लेकिन उस सीवी का इतना अट्रैक्टिव और अच्छा होना और खूबसूरत अंदाज में उसकी डिलीवरी होना, that is very important। very very important question to deal। अब इस सीवी के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और हर पार्ट पे हमें क्या करना चाहिए, that is very key question to deal with। इसके लिए कोई, अगर हम coming back towards the basic parts of a CV, there are no set rules जिसको हम कह सकें कि yes these are the set rules कि ये होना चाहिए और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए और यही ही होनी चाहिए। इसके लिए कोई सेट रूल्स नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड से पीपल आर देयर who have given the shape of a CV कि how your CV must be shaped। Some people say this CV must be having 5 parts, some people say that this CV must be having 6 parts, and different opinions are there। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो आपका नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल का होता है, फिर टेक्निकल पर्सनल एक्सपीरियंस और स्किल्स होती हैं, फिर वर्क और कम्युनिटी एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है आपका, फिर क्वालिफिकेशंस होती हैं, और फिर आपके रेफरेंसेस होते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि रेफरेंसेस से मुराद समटाइम्स आपको रेफरेंस देना होता है कि अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए कि रिलायबल रिसोर्स से कि मैं जो मेरी गारंटी कौन दे कि यहाँ पे अगर मैं जॉब करूँ देन आई वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस फर्म, तो उसके लिए आखिर में रेफरेंसेस दिए जाते हैं। समटाइम्स एक सीवी जब हम पुट कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपीरियंस्ड हों, तो उस सीवी का क्या होना चाहिए जब आप एक्सपीरियंस्ड हैं ही नहीं, एंड यू आर पुटिंग your CV in a firm for the first time without having any experience। Sometimes उस CV का फॉर्मेट क्या होगा जो आप
या इनएक्सपीरियंस्ड होके आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं फॉर अ जॉब, उसका क्या फॉर्मेट होगा. एंड व्हेन यू बिकम एक्सपीरियंस्ड, तो व्हाई यू आर लीविंग दैट जॉब, व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर सम अदर जॉब, एक्सपीरियंस्ड सीवी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपस में डिफर करती हैं फ्रॉम CV to CV. So some people are in the world who say that there should be 5 to 6 parts in there. 5 parts are there. Some people say no, there are 6 parts there. तो उसकी जो है हमने आज उसको देखना है कि एक CV के कितने पार्ट्स होते हैं. और यूजुअली वी वुड से, हम इसको हार्ड एंड फास्ट रूल्स वो नहीं कहते, हम कहते हैं यूजुअली, अमूमन जो है किसी CV के 5 पार्ट्स होते हैं. और समटाइम्स दे मे बी 6, 6 भी हो सकते हैं, जिनमें द वेरी फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर CV शुड बी योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. इसको मैं मज़ीद बाद में खोलने की कोशिश करूँगा, हाउ यू वुड राइट योर कॉन्टैक्ट एंड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल दीज. इसका दूसरा पार्ट टेक्निकल एंड पर्सनल स्किल्स होते हैं, जिसमें आप स्किल्स की बात करते हैं. मेरे पास ये तजुर्बात हैं, ये महारतें हैं, ये दीज आर थिंग्स आई नो वेल. थर्ड वन इज़ योर एक्सपीरियंस एज अ वॉलंटियर, वॉलंटियर पर्सन. योर वर्क एक्सपीरियंस इज़ देयर, जिसमें आप अपने काम के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ योर क्वालिफिकेशन. चौथा पार्ट इसका क्वालिफिकेशन आपके लिए है, जिसमें आप बयान करते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है और एजुकेशन मेरी इतनी है. द लास्ट वन इज़ योर रेफरेंसेस, रेफरीज, द नेम ऑफ योर रेफरीज. यूजुअली जिसमें एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस दिए जाते हैं अक्सर. तो अगर हम इनको मज़ीद खोलने की कोशिश करें, if we want to open all these details or the key elements of a CV, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, the way I am telling you. जहाँ तक आपकी पर्सनल डिटेल्स का ताल्लुक है, जो कि पहला पॉइंट है उसका, उसके मज़ीद 3 से 4 पार्ट्स हैं. Means when completing this section, which was the first one, your personal details, it has got 3 to 4 subsections. और उन सबसेक्शन में पहला आपका फुल नेम है पर्सनल डिटेल्स में. Write your full name. Then second one, your address. Third one, your date of birth. They are included in your personal details. Fourth one, your nationality. Sixth one, your contact phone number, including whom and mobile. And the next one, your email address. These are very important things, because if someone wants to contact with you, if there is not given your contact number, how he would contact you? Officially, people contact you through emails, and if you're not giving your emails, then how people will contact you? These are very basic things which are regarded or included in your personal details. Your full name, your address, date of birth, nationality, contact details, as well as your email. This is the very first one I told you, that is related to your personal details. Now, coming towards your second, that is your personal statement as well, you can say. That is the sub part of your personal details as well. This is again your personal statement that must be having a positive tone. And when you, that is basically not more than 1 paragraph, but most of the times it is less than 1 paragraph. It is less than 1 paragraph. एक पैराग्राफ से भी छोटी होती है, 3 से 4 लाइन की होती है.
This is your personal statement, and it must be attractive one. It should be giving an idea to your employer that this person is very hardworking as well as positive towards the view of life. It must be telling, it tells you something about your image कि असल में आप का सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, आपका स्टाइल क्या है, और it gives or it portrays your figure before your employer in a good way. So while writing your personal statement, you describe yourself actually. When you describe yourself, you have to use the positive words. आपने वो पॉजिटिव टोन ऑफ माइंड को अपने एम्प्लॉयर के सामने रखना होता है, और उसके लिए वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, समटाइम्स यू यूज़ द वर्ड ऑफ एम्बिशियस, आई एम एम्बिशियस टू दिस, समटाइम्स यू शो दैट यू आर एंथुजियास्टिक, समटाइम्स मोटिवेटेड, समटाइम्स यूजिंग द वर्ड केयरिंग, समटाइम्स यूजिंग द वर्ड ट्रस्टवर्दी, sometimes using the word meticulous, sometimes sense of humor, drive, sometimes your character, sometimes your determination. This is your what I would say in your personal statement. Actually, you describe yourself that you are such kind of person. You are enthusiastic. For example, you are enthusiastic, you are ambitious, you are motivated, you are caring, you are trustworthy, you are meticulous, you are determinant. You have got a will to succeed, or you are passionate, you are loyal. In the same way, you are good at teamwork, you are hardworking and all that. These are the adjectives which you use with your own image. And while using this image, actually you consider yourself. You're actually considering yourself like this, and at the same time, actually you're describing yourself. When you describe yourself like this, I'm enthusiastic and I'm ambitious man, and this and that, it gives the beautiful image of you in front of your employer, who thinks, yes, he's the motivated person, he's a really ambitious person to work here, his character is good, he's a meticulous man, he's trustworthy, is good at teamwork, is hardworking and all that. So these are very important in your personal statement. So first one was your personal detail, including few things: your full name, address, and date of birth, then nationality, then contact details, then references. Second one was your personal statement that must be starting with a positive attitude, with a positive word, with a positive adjective, rather I would say adjective. So try to think about yourself like this, and it would give the your image in front of your employer like that you are the person like this, as you're overwhelming yourself, as you're showing yourself, as you're portraying and picturing yourself before your employer. You would be like this. The selection of the words would show to your employer. दूसरा जो है वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने आप को वैसे शो करना होता है कि आप एंथुजियास्टिक हैं, आप मोटिवेटेड हैं, एम्बिशियस, ख्वाहिशमंद, कीन, इंटरेस्टेड देयर, आपको ऐसे लगना चाहिए. The next one, or I would say the third one, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है, जो कि उस आपकी पर्सनल डिटेल से, स्टेटमेंट से पहले जो जहाँ पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ख़त्म हो रही होती है. तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी अप्लाई दीज वर्ड्स, कि आप कैसे यू वुड गिव द बेटर इमेज ऑफ योर सेल्फ टू द एम्प्लॉयर, तो उसमें हमने जो वर्ड्स यूज़ किए थे उनमें से, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ यू आर राइटिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट, तो आपको कैसे होना चाहिए. For example, if you're portraying yourself instead of or in front of your employer, तो आप कहते हैं कि I am an extremely fit and active person who has a great deal of experience in this field.
and I have a record of high achievement. I have very good organization and motivational skills, and I'm always striving to improve myself. I believe that I would embrace the challenges that this new role has to offer. This is the image, this is your personal statement. You're motivated towards the things, you're portraying yourself like this. Then you give your employment history. Employment history, that must be in chronological order. If you had been working somewhere, then you give your employment history. आप अपनी employment history देते हैं, जिसमें अगर आप कुछ achievements हैं तो आप उनको बयान करने की कोशिश करते हैं. For example, if you have achieved something during your previous employment, then you have to put there. You have to use the words of achieved. If you have developed something over there, if you brought a progress to that firm where you had been working previously, या फिर आपने कोई चीज़ manage की हो, sometimes you create the things, then you have to mention there in your employment history. Sometimes if you have expanded something there while you stay over there, sometimes you direct the things. तो अगर आपकी इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी मौजूद है, तो आपने उसको अपनी उस employment history के अंदर बयान करने की कोशिश करनी होती है. That is the second or third stage. अगर हम इसको exemplify करें या quantify करें, फिर हम उसको कैसे quantify करेंगे, that is very important thing. और आपने उसको for example अपने इस employment skills में या employment history में अगर आपने इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश करनी है, तो उनमें एक सेंटेंस जैसे मैं अभी आपके सामने बयान करूँगा कि ड्यूरिंग माई टाइम विद द एम्प्लॉयर आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग माई टीम एंड ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. सो वट एवर योर जॉब डिस्क्रिप्शन इन द प्रीवियस जॉब वॉज, यू हैव टू शो इन दिस सेक्शन. देन the next one is your academic achievements. आप अपनी academic achievements को बयान करने की कोशिश करते हैं और उस academic achievements को chronological order में बयान किया हुआ होता है. Academic achievements में your schools, colleges, universities, they must be presented in chronological order, and you should also include the things which are co-curricular activities as well, which are relevant to your achievements. They must also be included there. Or any additional certificates which you have achieved during your stay at college, at university or schools. In the same way, your health and safety qualifications you should also include over there. They are also the part of your academic achievements. These are the things which would be included in this section that is called your academic achievements. क्वालिफिकेशन जितनी भी है आपकी, आपने उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और साथ ही अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान कुछ भी और किया है दैट इज़ रेलेवेंट टू योर अचीवमेंट्स, तो आपने उसमें शो करने की कोशिश करनी है, शो करें इस सेक्शन में. फिर नेक्स्ट इज़ योर, समटाइम्स वी राइट अबाउट आवर हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स. वो आपने इसके अंदर बयान करने की कोशिश करनी होती है, और वो भी बयान इस तरीके से करनी होती है it must be looking to the employer कि ये person, actually this is again the picture of you, you're portraying yourself like this कि अगर कोई शख्स कहता है कि my hobby is reading, तो reading से मुराद है कि he demonstrates himself as an intelligent individual who looks forward to improve the ways of knowledge of the subjects. और इसी तरीके से एक ऐसा शख्स है जो who visits gym and plays sports, अगर उसका इंटरेस्ट या हॉबी है कि वो जिम जाता है और स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ उसका इंक्लिनेशन या रुझान ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि एक्चुअली ही इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग हिमसेल्फ एज अ टीम प्लेयर एज वेल एज हैविंग डिज़ायर टू कीप योर सेल्फ फिट एज वेल, कि आप अपने आप को फिट भी रखना चाहते हैं और फिट टीम प्लेयर भी हैं, टीम वर्क आपका अच्छा होगा. और इसी तरीके से इफ़ यू
show in your hobbies that you play a musical instrument, तो उसमें आपने actually you're demonstrating yourself as a person having patience and ability to learn something new. आपका ये inclination या रुझान हो जाता है. If you show that your hobby is to be a volunteer person, you do the work voluntarily, it shows that you're a dedicated person and having a caring nature. That is very, it makes your CV as a powerful as well. Spending time with your family, this is your hobby, is that, then it means that you're stable and secure person. So it gives the image, I would say, it gives what image of you, that what sort of personality you have. आपके पास किस किस्म की शख्सियत है. Any other information अगर आप उसके अंदर बयान करते हैं, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई स्किल है आपकी जो आपकी हॉबी का हिस्सा है, यू मे फील, और आप सोचते हैं कि वो बेनिफिट भी आपको देगी, then any other information you can put in this section. The last section of your is your references. That is very important. Most of the times we have to have 2 references. हमें 2 references देने होते हैं, और उन 2 references में हम ये करते हैं कि if the employer needs any reference, तो उसकी 2 किस्में हैं. Sometimes हम कहते हैं कि references will be provided to you on demand, और sometimes हम वो references उसके अंदर दे ही देते हैं. और उन 2 references की फिर कुछ जो references हमने दिए होते हैं उसके भी कुछ लवाज़मात हैं. और अगर आप कहते हैं कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन डिमांड, या फिर अगर आपने वो रेफरेंसेस दिए हैं तो उसके क्या एथिक्स हैं कि आपको वो क्या सोच के रेफरेंसेस देने चाहिए. पहली बात तो ये कि वो रेफरेंसेस आपके लिए लॉयल होने चाहिए, बिकॉज दे प्रेजेंट यू इन योर एब्सेंस, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट करेंगे आपकी गैर मौजूदगी में. तो जब भी आपका एम्प्लॉयर अगर उनको कॉल करता है तो दे मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी पीपल, and you must be careful between looking and choosing the people. आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए एहतियात बरतनी होती है. It is good practice to include at least 2 references at the end of your CV. But the person whom you are presenting as your references, they must be having a positive mind as well towards you. आपके बारे में उनके ख्यालात पॉजिटिव होने चाहिए. And you must be also careful कि they must give you the first priority if someone puts a question about you, तो उन्हें आपके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ ही देने चाहिए. So this is very short term, something about writing your CV, developing your CV. The very important thing, the CV is your presentation actually. So it must not be made, it should not be shaped. इसको आप ऐसे shape या तश्कील ना दें कि ideas are coming from nowhere, blindly write a CV, open a laptop and then write your CV. ऐसा नहीं होना चाहिए. It is the work of very पेशेंस, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं. ये सब्र का सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन बना लें. आप अपने बारे में सोचें कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर योर सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट आर योर हार्ड स्किल्स, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड, they are included in your skills. Do you know softwares? If you use the softwares, so what are those softwares and how much practice do you have of them? How much skilled you are about them? How do you know something about them? You must be clear about yourself first. Write them down over the page, then start developing a CV. And each and every minor detail regarding you must be present there. One misconception which people have got about the CV, that they make a common CV and they put that CV at every place. That is something that is what should I say? It's not good
to present and put just one CV at every place for every job. Every job nature has got different kind of needs and skills. You need different skills. आपको different skills की भी ज़रूरत होती है और हर जॉब के डिस्क्रिप्शन के लिए उसकी नीड्स भी अलग अलग होती है. तो हर जॉब के लिए आपको एक नई CV डेवलप करनी होती है that should meet the needs and requirements of that job. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो उसके लिए जॉब की नेचर और है, ज़रूरियात और हैं, उसके लिए CV की नेचर भी और होगी. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्रैक्टिकल वर्क समवेयर, तो उसकी जॉब की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और हैं, आपको उसकी भी ज़रूरत और होगी. इस हिसाब से आपको अपनी CV हर जॉब की डिस्क्रिप्शन के और नीड्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप करनी होती है. यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. This is the way that it was the short lecture on making how to make a CV. Hope so it would be beneficial and giving you some basic informations regarding the CVs, information of CV. And if you would get any questions, please you can get them right and office them. Then I would inshallah help you further. And if you've got questions and if I achieve them get them from the department or get them from the office, in the next lecture I will try I should improve, not improve, I should throw the light over your questions, and every question which is arising in your mind, it must be answered accordingly. So this was the way how to make a CV. Thank you very much. Allah Hafiz.